Subscribe to Filmy Mirchi for all What Women Want episodes and click the bell icon to receive all updates. शेक्सपियर ने कहा था व्हाट्स इन अ नेम, बट आई आस्क व्हाट्स इन अ सरनेम. एक लड़की अपना सरनेम बदले या ना बदले, आप अपना माइंडसेट बदल लो बस. दैट्स समथिंग व्हिच नीड्स टू चेंज. एक वुमन से एक्सपेक्ट किया जाता है टू लीव एवरीथिंग एंड अडॉप्ट द गाइज सरनेम, फैमिली, लाइफस्टाइल, एवरीथिंग. Yes, there is a lot of headache in changing your surname, but as long as it's your choice, why should anybody care? And मेरे पास तो choice था. I had a choice and I chose to add Khan after Kapoor. ना मुझे करीना कपूर बुलाया जाने से प्रॉब्लम है, ना करीना कपूर खान. Filmy Mirchi presents Dabur Amla What Women Want. Snack partner Mr. Makhana. आज हम बात करेंगे about how patriarchy affects women. We are in conversation with the lovely Swara Bhaskar, who is here to share her Dabur Amla story of strength with us. How tough is it to call out patriarchy in your own home when you see it happening? Yeah, I mean, I think that of course it's tough, right? क्योंकि सबसे मुश्किल चीज होती है खुद से सवाल उठाना या खुद पर सवाल उठाना और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं जिनसे आप प्यार करते हैं, your brother, like you said, बॉयफ्रेंड. मुझे लगता है अक्सर बॉयफ्रेंड्स जो हैं वो बहुत बिना रियलाइज किए हुए. बट यू नो आई ऑलवेज फील कि इसको एक जंग ना देख के इट हैज टू बी अ कॉन्वर्सेशन, बिकॉज यू नो I feel sometimes bad for the boys also. Like हमारे generation के boys, because यार उनकी parenting में भी कुछ ऐसा नहीं है जो उन्हें equip कर रहा है डील करने के लिए एक ऐसी औरत के साथ जो strong है, opinionated है और जो जिसे अपनी मर्जी करनी है. क्योंकि उनको भी बचपन से यही सिखाया गया है. एक वो राजा बेटा वाली mentality जो होती है ना, तो silently they have also imbibed all that. So like, and I've actually had this experience like in my own relationship where Himanshu we didn't realize until one day I was like, actually I had a fight with him about this, and I was like, you never talk about your work to me. Like, why? We work in the same industry. But I would think that you all both would always talk about. No, like he'll discuss his scripts and all, but like his office is a very sanctimonious space, and he gets very like, office. If I'm like, oh, I'll just drop into the office to, and he gets like very like nervous and nahi office क्यों आना है ना. I'm like, bro, मैं actress हूँ, मैंने 3 फिल्में करी आनंद राय के साथ. Yeah, I have the full right to. But what is the reason that he was like that? And he wouldn't talk about, his work. And he then said to me, and we spoke about it, and he was like, यार पता है शायद इसलिए क्योंकि मैंने कभी अपने घर में अपने फादर को मम्मी के साथ ऑफिस के बारे में बात करते हुए नहीं देखा. वो हमेशा जब घर आते थे वो ऑफिस में छूट जाता था. उन्होंने कभी अपनी ऑफिस की प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं की, कभी अपने काम को डिस्कस नहीं किया. वो घर आते थे, मम्मी बताती थी घर में क्या हुआ, इनका फोन आया, a very typical kind of situation. Like a typical middle class, Uttar Pradesh family. And I was like, which is fine, but yeah, your mummy is different, I'm different, So these things like this हम realize भी नहीं करते हैं. So I think that. Do you think that Bollywood films patriarchy को बढ़ावा देता है? यार बॉलीवुड भी तो हमारे समाज का ही हिस्सा है ना. तो जब समाज में कोई कॉन्शियसनेस नहीं है तो बॉलीवुड में कहाँ से आ जाएगी? Yeah, exactly. Like you said, Bollywood films are not technically meant to be changing society also in a way. No, it's I not always like feel it's the other way around. कि society बदलेगी तो बॉलीवुड बदलेगा. Absolutely. Audience बदलेगी तो बॉलीवुड बदलेगा. And that's what we have seen, right? Social media के आने के साथ, suddenly all the producers and all the directors can actually hear the audience's opinion. Like, much closer than before. And you can't avoid it now, And there's like a live, kind of answer. It's like, oh my God. So I think that actually it has to be the other way around. But I think Bollywood ने बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं. मतलब उस जमाने में भी, like सुजाता अगर देख लो या बंदनी या मदर इंडिया. But coming back to your bold scene in Veere, I mean, the fact that it's, happened, I think it's only because cinema is changing in a way. Yeah, of course. I mean, I don't think this scene would have been possible 10 years ago, or even I think 5 years ago. I don't think so. Yeah. So what do you have to say about your particular scene in Veere? I mean, when जब मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ा तो रिया ने एक्चुअली मुझे साक्षी ऑफर नहीं किया था. Yeah, I remember. उसने मुझे मीरा का रोल ऑफर किया था. एंड मैंने पूरा स्क्रिप्ट सुन के ये सीन सुन के मैंने रिया को कहा कि यार रिया मुझे ये फिल्म करने दे. क्योंकि ये सबसे कंट्रोवर्शियल सीन होगा तो स्वरा जी ने यही कहा कि मुझे यही करना है. I was like, it's different. ये it's like ट्विटर पे थोड़ी और बातें होंगी. इतना भी नहीं सोचा था. But I was just like, this is the most different thing. जो मैंने कभी नहीं किया. मुझे नहीं पता कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे दोबारा अगर मिलेगी कि नहीं. But मुझे ये नहीं लगा था कि इतना बवाल टाइप हो जाएगा, सीन को लेकर. But do you think it was appreciated more, or do you think that you were trolled more? See, मेरा केस थोड़ा अजीब सा है, बिकॉज मेरे जैसे आपके डेडिकेटेड फैंस हैं जो बिल्कुल एक आर्मी है, मेरे डेडिकेटेड हेटर्स हैं.
तो वो बिल्कुल ऐसे शिद्दत के साथ नफरत करते हैं मुझसे. I don't think so. It's really true. और कुछ उनमें से कुछ ने ट्विटर छोड़ के इंस्टा पे भी अकाउंट खोल लिए सिर्फ मुझे ट्रोल करने के लिए. So I'm like, this is real sincerity. So उन सब ने तो of course यूज किया क्रिटिसाइज करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि लार्जली हमारी फिल्म को अप्रिशिएट ही किया गया. और सिर्फ ये सी नहीं, बट हर तरीके से. I mean, I think you know your character also. आपने कब एक हीरोइन देखी है जो कमिटमेंट फोबिक है? हमारी ये कमिटमेंट फोबिया हमने सिर्फ अपने बन्नी और अपने कबीर और अपने लड़कों को दिया है. वो यू नो लाइक सलमान सर कैरेक्टर इन जब प्यार किसी से होता है, और सैफ इन सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते. You've never seen a heroine be commitment phobic. So all the characters were quite, yeah, or Sonam's character, all of that scene, or Shikha saying I haven't had sex in a year. Who says that, you know, in Hindi films? But definitely, I mean, I think the best scene of the film was the bold scene that you did, because I think it was absolutely amazing. No, the best scene of the film was where you guys fell off the chand. Oh God, yeah. Listen, I want to do that in my Sangeet, I've decided. पहले हिमांशु को पूछ तो लो. He's also commitment phobic. He's also fine. So he's playing Kalindi's character. He's playing Kalindi's character. So Swara, लोगों को लगता है कि patriarchy affects only women. What do you think? I think that's completely untrue, because I think कि patriarchy जिस तरीके से औरतों को एक खास किस्म के दायरे में बांध देती है, वो एक्चुअली मर्दों को भी एक खास किस्म के दायरे में बांध देती है. यू नो, वो मर्दों पे एक खास किस्म के मर्द होने का बर्डन डालती है. यू नो कि मर्द कमाएगा, परिवार का ख्याल रखेगा, हेड ऑफ फैमिली है, तो एक खास किस्म. लड़कों को रोना नहीं चाहिए, जो सबसे एक टिपिकल मुझे लगता है पूरी दुनिया में एक. I love boys who cry. Yeah, but like you know how it is. Yeah, but it is that norm. Yeah, it is. Men don't cry. Yeah, बच्चे जब छोटे होते हैं तो जो हमेशा, you know, I always feel कि ये जो gendered वो होता है, बच्चों को जो toys मिलते हैं ना, उसमें आप देखते हैं कि boys को हमेशा cars and guns मिलते हैं और girls को वो हाँ house घर and वो बर्तन and like. Yeah. So I think that patriarchy actually, you know, binds men in a certain kind of a stereotype as well. Yeah. So which is why for me, अगर feminism की लड़ाई सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, वो मर्दों के लिए भी है. You know, आपको you can be the man you want to be, you know, and I actually think, मतलब I know it's easier said than done, कि ये पूरा idea ना कि मर्द breadwinner है. क्यों अगर हम औरतों को ये option दे रहे हैं कि आपको housewife या क्या what's it called ना homemaker बनना है, हमारे culture में. And your film deals with that, right? Yeah, Ki and Ka was brilliant. Do men have that choice in our society? Not really, it was the right? first time. I think that's why it was a difficult subject also for people to digest at that time. Yeah, so absolutely. So, you know, even the most, I think, educated, liberal people have very, very rigid views. So, ये thinking कैसे change हो सकता है? I mean, I think कि मेरे को हमेशा यही लगता है कि education सही मायने में वो चीज़ होती है जो आपको ज़्यादा empathetic बनाए, मतलब ज़्यादा आपके अंदर एक सहानुभूति पैदा करे दूसरों के लिए, और दूसरी चीज़ आपको सवाल उठाना सिखाए अपने से सबसे पहले. You know, दूसरों पे सवाल उठाना सबसे आसान चीज़ है. Yeah, that's the most easiest. Yeah, but अपने आप से भी तो सवाल पूछो कभी-कभी. And that's actually something that I am also, like, I feel like right these days I'm like thinking about that a lot, because I'm like, यार ठीक है ये सारा ट्विटर पे ये ट्विटर वॉरियर का ये सब, but am I becoming like too negative? Like, I think it might make you negative. Yeah, you know, like people get offended, you know, at sexist jokes also. Yeah. I mean, I feel that, but some people think that it's too much, you know, to get offended on everything. I mean, I think that, you know, if अगर हर चीज़ पे आपको गुस्सा आ रहा है तो आप कहीं पे अपना sense of humor खो रहे हो. I mean, it's okay. But like, do you think that Twitter and Instagram और जो लोगों के opinions है, जो trolls है, it is affecting you in a way? I just feel कि you know, आप सुबह उठते हो और सबसे पहली चीज़ अब हम अपने स्मार्टफोन चेक करते हैं, WhatsApp के कितने मैसेज आए, फिर ट्विटर, फिर Instagram, और ट्विटर पे अगर आप यही देख रहे हो. Is that what you do the first thing? Yeah, this is a most unhealthy lifestyle is mine. Is yours? हाँ, first I sleep at 5 in the morning, wake up at 12:31. So यहाँ पहुँचने के लिए ऐसे मैंने बहुत. और you sleep at 5-6 in the morning, आप ट्विटर पे हाँ रात में trolls के वो पढ़ रहे हो. ट्रोल्स के या रिप्लाई कर रही हूँ ये सब, बट आई एम नाउ ट्राइंग टू चेंज दैट. Yeah, you have to change that. Yeah, so it's just like a really toxic kind of way to start your day, right? Like a stupid day way. So I think कि आजकल मेरी ये self questioning चल रही है. जैसे पॉजिटिविटी कैसे लाओ अपने लाइफ में. You have to do that. Swara, I think that I have two things to say. Firstly, of course, thank you for coming on the show. But I think that talking to you, I always get to realize that I am somebody that I want to learn more.
And I not only learned from you as an artist when I worked with you in Veere, I was always amazed when you were giving your shots. I admire the fact you're such a method actor, that learning, that you know, that kind of passion that you had on the set. I admired that, and I always admire your zest now for being so strong and so opinionated. I get to learn. I've learned a lot on this lovely chat. Thank you so much, Swara, for coming on my show, What Women Want. Lovely. Thank you. Hey guys, आपको मुझे कोई भी बात बोलनी हो तो leave a comment below. If you want more videos like this, don't forget to hit subscribe.